Good evening, Cyber Diksha. I am Navneet, and thank you for joining. Hi, welcome to Changemaker Adda. Thanks for joining. We'll start in few minutes. हम थोड़ी देर में start करेंगे.
Hi, thanks for joining. Good evening, everyone. We'll start in a couple of more minutes. We are waiting for more ninjas to join us. Thank you so much for joining on time. While we wait for others, can you all type in the chat where are you calling it from today? Which city or which state you belong to? We'd love to hear that. I think we can start now.
It's already 6:03. We have almost 30 ninjas from different parts of the country. Navneet, can we start the timer? Yeah, definitely. Uh, Sorry, somebody's sharing their screen. Okay. Yes. We can start, Ritika. Can we have the video, please? Can you repeat? Can we have the video, please? Yeah. This is you, a Solve Ninja, the new age changemaker solving problems at the hyperlocal level. Solve Ninjas use local data, local solutions, and local campaigns to solve for issues in their neighborhoods via small but consistent actions. But some issues are too big and complex for one ninja alone. But what if you aren't alone? What if there are many others across the country, just like you, working to solve local problems? Your individual actions are powerful, but the real magic happens when we come together to learn, grow, and celebrate our journeys. Building India's largest community of active changemakers. Together, we are the Solve Ninja movement, and we are unstoppable. Thank you so much, and a very warm welcome to all of you. I would have said good evening, but I can see there are ninjas from different parts of the world. So, good morning, good afternoon, good evening. And there are ninjas from various languages also. So, I am Ritika, I'm the host for today's Changemaker Adda. Change We are building India's largest and first civic and climate community of change makers. I would like to introduce a little bit about Reap Benefit for those who are joining for the first time and wondering who are these people, what are we doing, right? And why do we have almost 35 people on this call? So at Reap Benefit, we are building a nationwide movement of 10 million people who are called Sol Ninjas. And our aim is to do this by 2030, and you all are part of this. What are we doing? So, these Sol Ninjas are going to be the civic and the climate leaders who will act and solve their local challenges in their neighborhoods. So, a very warm welcome again to the Changemaker Adda. This is the second Changemaker Adda that we are hosting. The first Changemaker Adda happened in the month of June. Uh, Before we go ahead, I asked you earlier which cities or which state you are from. And I can see we have ninjas, youth joining from Assam, Punjab, Amritsar, Punjab again, uh, Jalandhar, Bengaluru. So those who just joined in, can you please type in which city or state you are from? We'd love to know where you are attending this Changemaker Adda from. Subhani is from Hubli, from Karnataka. And while you're doing that, or those who have already typed in, can you put up your favorite emoticon or the favorite reaction on this Zoom, if you know how to do that? So it will go something. For me, it's actually this. Thanks, Lakshay, for the thumbs up. Asma is from Assam. A lot of ninjas from Assam. Gautam Raj is from Chennai. All right. So
lot of diversity here. Uh, can I also know what languages do you speak so that we can make the next 1.5 hour a very smooth, inclusive space? I will be speaking in English majorly. मैं English में ज़्यादा बात करूँगी. But इस कॉल पे, इस मीटिंग पे हमारे पास डिफरेंट ट्रांसलेटर्स हैं जो हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, पंजाबी और तमिल बोलते हैं. Navneet, can we put up the poll for language, please? There's a poll on your screen. Can you please put up which language you are most comfortable in? Oh, I can see there's Hindi. There's a poll on your screen. If you are on your phone, there's a small screen. एक छोटा सा screen आएगा आपके मोबाइल पर. Okay, I can say there's a mix of Hindi, English. Some people are comfortable with Kannada. So we'll try to cover all these languages. And I'll move to the next space. Okay, so when we went through the registrations, you all registered, much in advance. Thank you for doing that. When we went through the registrations, one thing that was very common in terms of all of your expectations was that you want to learn something new. And I'm really glad that matches your expectation. So what is Changemaker Adda? Changemaker Adda is actually a learning space where you learn from other ninjas or the other change makers through their work. Their work can be in reporting a local issue around them. It can be around campaigning a certain issue. It can be they building a solution or working on a challenge very hands-on, right? Going on the ground, working on it, or maybe building a solution, building a tool, building an equipment using technology as well. There are various ways to solve challenges. And the entire idea of having a Changemaker Adda platform is that how can we bring the stories of various change makers on this national platform. So last time when we did the Changemaker Adda, we had ninjas from 10 plus states. We had 60 ninjas who came in. We had 4 speakers, just the way we will have it today. Changemaker Adda is a national online space so that we can reach out to as many change makers as possible across the country, in fact, across the world. And today's Changemaker Adda is actually a proof of that. I would like to quickly jump to the format for today. But before I actually go to the format, many of you may be wondering why you cannot unmute yourself. So we have switched off your mics. You will be able to speak after the speakers are done. This is just to ensure that there's no disturbance while many people will be entering or exiting during this call, okay? And we will be going into a breakout room. That's when you can share, talk, share your experiences or ask any questions. So what is the format of Changemaker Adda? We will have 4 speakers. Every speaker will get 9 minutes. What will happen in those 9 minutes? They will share about the problem that they identified. What was the solution of that problem that they figured out or how they worked? If there are challenges that they face, they would love to share that with this entire community. And lastly, what is it that they want something from this community, or they may want to give something back to this community, which is all of you, all these Sol Ninjas across, right? So after that, we will be breaking out into different rooms. We will have 4 breakout rooms of each speaker. This breakout room will be for 15 minutes. You can go and ask questions to a specific ninja that you really want to ask questions or learn in more depth. This is what peer mentoring, peer learning looks like. You can also share something that inspired you, or maybe you're working on something similar and you want to share it
with a larger group of ninjas. Okay. If you have any doubts, please put it in the chat. Priyanka has summarized this for those जिन लोगों को इंग्लिश नहीं समझ आती है, प्रियंका ने उसे हिंदी में, इंग्लिश में चैट पे लिखा है. तो आप अपना चैट भी देखते रहिए. हमारे सारे स्पीकर्स डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, एंड दैट्स हाउ वी वुड लाइक इट, राइट? ऑल आवर स्पीकर्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. Without much ado, I would like to call in our first speaker. Can we move to the next slide, please? It's my privilege to introduce our first change maker for today. I would love to invite Pranav, who is currently in USA. Thank you, Pranav, for joining this early in the morning and being able to share your learnings with this group. So Pranav is going to talk about how he used technology to save the lakes of Bangalore. And he did this quite a few years back. And I will not share much more and would love Pranav to share his journey. Welcome, Pranav. The floor is all yours. Hi. Thank you, Rizka. I was wondering if I need to be admitting people that are coming in, or is somebody taking care of that? I think you're on mute. Please go ahead. That's for us. You can ignore Okay. it. Yeah. Sounds good. Hello, everybody. I will be speaking in English. I apologize. But if you have any questions in Kannada, please put it in the chat. Nange Kannada nu barutte, but anyways. So yeah, I'm Pranav. A bit about my story of solving problems started out when I was in high school. I learned about reap benefit, which is when I was, I think, in 8th grade. And I started going for these things reap benefit was holding. There were these sessions after school. And I think that's where my muscle of really, I always used to ask a lot of questions. I always used to ask questions about how you could solve stuff, like why things were the way they are. And I think the benefit basically encouraged me to continue asking questions, and kind of pointed me to how I could, go ahead and gave me experiences of solving problems, whether they were, working in fixing sanitary conditions in government schools, in Bangalore, or anything else it may be. I kind of got those initial experiences from Reap Benefit, and they were the first few people that helped me build that muscle of identifying problems and looking at how to add small solutions in. So when so back when I was in high school, when the Kaveri crisis happened in 2016, it was a big deal because a lot of we were sent home from school in the middle of the day, and there were a lot of riots in Bangalore. Some of us know about it pretty well, and what I started to, what me and my friends started to ask ourselves is why are we so heavily reliant on a river that's 140 kilometers away? It's really far away. And the more research we did into it, the more we realized is that in around 1960, we had close to around 200 and over 200 lakes. I forget the actual numbers now, but and cut it and back in 2016, we had just less than 35 clean lakes. So which is a steep decline into what we have today. So, and I'm sure it's probably a little lesser. That number is probably a little lesser today. So one thing we try to ask ourselves is, why is there no data on this? Or like, how do we find this data? So we went on a couple of government websites. We couldn't really find a lot of information. And so that was one of the questions I asked myself is if there's no data, how can we get this data? Because finding data to solving
to understanding a problem is the first step. You want to see how massive the problem is. Um, and so what we did was we were like, okay, what if we can, I had a sense of a technical inclination. So I like building technology. I like, building stuff. So I was like, what if I could build a quick tool that could let me, monitor water quality, and see what it's like. And that led me to learning more about, the different parameters used in monitoring water quality. It's not as simple as, let me go and look at what the water quality of the lake is. Can I drink it or not? So it it so then we started working with the help of a lot of people who kind of pitched in their expertise, and kind of helped us build a tool. But it took a close to around like 2 to 3 years of iteration of going from a small little uh, thermocol board with a bunch of electronics on it, and measuring it in a very like like a very rudimentary manner, uh, to building an actual device that had some that had the ability to float. So I could probably, I guess screen sharing is enabled. So one second. Oh, for some reason my computer is not letting me share. Yeah. Please go on in the meanwhile and we'll share the screen. Navneet, Okay. can you share your website? Yeah. Sure. Yeah, if you can just share this link I sent in the chat. Yeah. Cool. So if you scroll down a bit, slightly more, a little more, to like where it says, yeah, that like go there. Yeah. So that was me and my friend, and this was the first iteration of building something that we can actually take to a lake. Before that, it was just a thermocol board with electronics on it. You can't really look at that in any way, or you can't really, figure out how to you can't use that in a lake because electronics is exposed to water. So we built this initial version where the top is where like all the electronics is housed, and it sits on a something called a buoy, or what lifeguards use when you swim. And it was around 16 kgs, and we were able to test this in a few lakes initially, thanks to a lot of lake activists that still work really hard to this day, to clean up the lakes. They allowed us to go and test and provide them with water quality data. And so this was the initial one that we built, and it helped us, go to a couple of lakes and get data. Some that data is like still on like the website if you're interested in seeing it. But could you scroll up a bit? Scroll to the top of the page. So yeah, so that was the top of the page. Up a little more. Up, yeah, a little more. Yeah, so that was a second device that was, being deployed in lakes. The advantage of this device is it was a lot smaller. We had a lot of help that came in from, a lot of people wanted to help. A lot of people pitched in resources, and their background, engineering background. So we had like a product designer who helped us make it a lot more compact. And that through that we were able to, manufacture a device that we were able to test over, I think, around 8 lakes in Bangalore. So yeah, we did a lot of testing, and the advantage is we started off with just basic parameters of pH and electric conductivity, and very basic features that don't tell you much about if the water's safe or not. But then we added in things like dissolved oxygen, and the advantage is we started. So this device would basically monitor the water quality,
as well as it would map it. So every time we would collect water quality information, we would collect GPS. We would collect GPS coordinates as well, which would kind of map on a Google map. So that was pretty cool to see. And so yeah, so we call this device Flowbot. It took a couple of years to build, but we did that. And I think more importantly, this whole experience of solving problems that were step by step into like different iterations, and interacting with different lake activists, and trying to like help out, I think really like built a muscle to look at problems, figure out how to like break them down into smaller problems, and solve smaller problems, and finally and yeah, solve small then big, I guess. So yeah, so that was my experience. I landed up going to, after I built Flowbot and we did this, this project was taken over by somebody else, and they tried to commercialize it, but those efforts weren't as successful. But yeah, I mean, if anybody wants to take this forward, I'd be happy to share more information on how that's possible in some way. And yeah, but after Flowbot, I landed up going into the world of solving problems, because I just love doing that. And so I started working at a different a startup. So I built an edtech startup after that, where we tried to basically improve the way like people get educated on certain courses. Did that for a few years, and then now I work at a technology at a startup again, helping educating people with like technology and how to use certain technologies. So yeah, I have a pretty deep experience of building technologies to solve problems. And so I guess my giveaway here is, if anybody has building a technology solution, something that's technical, I'd be happy to help you and mentor you in any shape or way form. But yeah, that's a bit about me. Thank you. Ritika, please let me know if I didn't go through anything. No, that's it. Thank you so much, Pranav. So what I understood from, if I have to summarize what you shared, that a simple challenge that you saw in your nearest lake in your neighborhood, the Kaveri crisis, prompted you to come up with your own solution, rather than waiting for somebody else to start, right? What I understood is that it took you almost 2 to 3 iterations to finally come up with a model which was working. Right. Yeah. It meant a lot of testing for you. And we have the testing results also from you, which we'll share in the group chat. So I think my key takeaway is that failure is okay. You have to keep trying. Most of the things in the world do not work for the first time, but that doesn't mean that it's not going to be successful. I think the other key takeaway from what you shared, and this is for all of us, is that sometimes when we identify a challenge, the solution, part of the solution may lie with us, but a part of solution actually lies with the community itself. So when Pranav said that he actually went and talked to the activists who are working around water, the cleanliness and the saving water, even how to save water, that was a very key insight for me. He actually went on the ground, talked to different people who are involved in this, to bring out the real depth of the problem and create a solution, create a flood pot from there, right? I'll let Pranav share more about this in the breakout room, or if any of you has questions, we'll get there. What I'll do going forward now is, let's move to the second speaker. So if you have questions, if you have some key learnings, and this is for all of us, please hold on to that thought. Or if you feel you will forget, type it in the chat so that you don't forget. And join Pranav's breakout room if you want to learn more on how to use technology from here. Okay.
Uh, so my next speaker, I wanted to keep it a little guessing game, but we have it on the screen here. We have Rajinder from Punjab. Rajinder has been doing something very amazing and something very different. He's been creating mini forests in Punjab, especially in his city. He's been growing plantation like he's been planting saplings in various parts of his cities, even the nearby villages in the city. Uh, Rajinder, welcome to Changemaker Adda. Rajinder will be speaking in Punjabi. Rajinder Punjabi में बात करेंगे जो हम सब शायद नहीं समझ पाए. तो उसके लिए ट्रांसलेशन चैट पे होगा. प्लस हम थोड़े से राजेंद्र के जो वर्ड्स हैं वो स्क्रीन पे भी लाने की कोशिश करेंगे. राजेंद्र, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं. आपके 9 मिनट्स अगले 10-15 सेकेंड्स में स्टार्ट होंगे. ठीक है. हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ. ਮੈਨੂੰ ਵਖਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈਲੋ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ. ਮੈਂ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈਗਾ. ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਖਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ. ਤੇ ਰੁੱਖ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੀ ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਗਈ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ. ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਆ. ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ. 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਰੁੱਖ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ, 40,000 ਬੂਟੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਨੀ ਜੰਗਲ ਵੀ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ. ਬਾਕੀ ਆਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ 550 ਬੂਟਾ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਰੁੱਖ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10-20 ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਗਾ. ਜੋਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ. ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੱਤੇ ਨਾ ਖਿੜਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਨਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਵੰਡਣ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਰੁੱਖ ਵੀ ਘੱਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਛੋਟਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ. ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨਾ ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੇ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ. ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੁੱਖ. ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੌਦੇ ਲਾਉਣਾ, ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ, BBC ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ 18 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ. ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ. ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਵਨੀਤ ਮੈਮ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਜੀ, ਰਿਤਿਕਾ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ, 3-4 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਇਕੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੌਦੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊਂਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। बाकी ये कोई क्वेश्चन हो आगे पूछ सकते हैं। राजेंद्र, आपके पास अभी 3 मिनट और है। क्या आप थोड़ा और डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि आपने इस प्रोसेस में क्या चैलेंजेस फेस करे? आई थिंक वो बहुत दूसरों को सुनने में हेल्प करेगा कि वो अपनी प्रॉब्लम्स पे कैसे सॉल्व काम कर सकते हैं, राइट? या हाँ यस मैम, ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕभी ਲਾਉਣਾ ਹਨਾ, ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਰਕ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਚੈਲੰਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਖਿੰਡਣ, ਵਧੀਆ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਏ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਏ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੈਲੰਜ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਲਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਆਗੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀ ਗਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਸਾਲ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੁੜ ਵੀ ਗਏ। ਮਾਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨੀ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਰਜਿੰਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬੂਟੇ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਘਾਟਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 20 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਗਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ 2 ਲੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਨੀ ਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ 4-5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਡੈਡੀ ਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕੰਮ ਆਗਾ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦਾ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ
ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਛੋਟੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੁਦ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। थैंक ਥੈਂਕ यू ਯੂ, राज ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। थैंक यू बरनाना से ये मीटिंग अटेंड करने के लिए, और स्पेशली अपने अपने फ्रेंड के घर जाके ये इंश्योर करने के लिए कि आपका इंटरनेट वर्क कर रहा है, ठीक, आप अपने फार्म से बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो जिन लोगों को नहीं समझ आया जो राजेंद्र ने बोला, हम उनके लिए नवनीत ट्रांसलेट करेगी जो राजेंद्र ने अभी पंजाबी में बोला। But before that, I want to highlight one thing. I think this is the speciality of this is a special part of Sol Ninja community, right? How there are different languages, people from different states are coming together and doing something very impactful, which will relate to us, right, in different ways, whatever we may be doing, whichever part of the world we may be. Navneet, can you please translate what Rajinder said in a minute or two? Sure. Hello everyone. I hope I am audible. So before I start sharing about what Rajinder has shared, one thing which I would like to mention about him is he's very choosy for his pictures. And when I use that picture of him, he actually shared 50 more pictures of him doing the plantation so that I can use those pictures um, for the presentation. So yeah, apart from that, Rajinder has shared that what actually inspired him for doing the plantation is his grandfather, because his grandfather used to do the plantation. Right, and so far Rajinder has planted 40,000 saplings in his village. Along with the plant saplings, he has put 10 mini jungles across his village and across his district. Along with that, he has shared that what challenges he faced while he do the plantation. One of the challenges, because he has mentioned that people are very choosy about which plant to be kept outside their home, because the leaves of the plants fall and the leaves enter their houses, etc. That's the one challenge he has shared. Second challenge is that he has mentioned that when he chose to distribute the plants to other people, right, they actually do not understand the importance of plants, right, and they actually do not plant that, and that destroys the saplings. Yeah, that's about it. And yeah, he will be added to a breakout room. There will be one translator with him. If you have any questions, you can ask. Thank you. Thank you, Navneet. And I think I'll summarize Rajinder's journey or change making journey, or what I understood. मैं हिंदी में बोलना चाहूंगी because I can, यहाँ मैं देख सकती हूँ बहुत सारे लोग हिंदी में कंफर्टेबल है, प्लस ये राजेंद्र के लिए है स्पेशली। सो राजेंद्र ने बहुत हैंड्स ऑन अप्रोच यूज किया। उन्होंने अपने ग्रैंडफादर से इन्फ्लुएंस होके आज तक वो 9 इयर्स, एंड उन्होंने बोला वो अपने लाइफ टाइम ये जर्नी करना चाहते हैं, वो ट्रीज प्लांट करना चाहते हैं। उन्होंने देखा है कि टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2 से 3 डिग्री तक कम हो जाता है जहाँ पे ट्रीज का क्लस्टर होता है। उन्होंने बोला वो मिनी फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हैं, राजेंद्र ने 10 मिनी फॉरेस्ट ग्रो करे हैं, राइट। और इसके इफेक्ट्स हैं कि जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो उस एरिया में ज्यादा होने लगे हैं। लोगों की हेल्थ उस एरिया में उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया है, राइट। ये उनकी खुद की ऑब्जर्वेशन है जब वो ग्राउंड पे जाते हैं कि बेटर है, वहाँ की एयर बेटर है, लोग कैसा फील करते हैं मेंटली फिजिकली, वो बेटर है। और ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है, जब हम जहाँ पे भी रहते हैं, जो भी हम काम करते हैं, कि हम जो भी काम कर रहे हैं उससे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है
और क्या हम उसे मेजर कर पा रहे हैं, क्या हम उसे देख पा रहे हैं वर्सेस सिर्फ करने के लिए। एक बहुत अच्छी बात जो मुझे राजेंद्र की लगी, उन्होंने बोला जब वो फोटोज शेयर करने लगे, when he started sharing his photos is when he was more in the limelight, that's when people started recognizing him, लोग उन्हें ज्यादा जानने लगे। और ये हम सबके काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं नेबरहुड में, सिविक और क्लाइमेट चेंज एक्शंस ले रहे हैं, तो अपने अपने नेबरहुड में वो एक्शन दूसरों तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या हम वो शेयर कर रहे हैं सॉल्व करने के बाद, या फिर वो जिस भी स्टेज में है, इस एक एक इन्फ्लुएंस से बहुत सारे लोग, डिफरेंट लोग जुड़ सकते हैं या उस पर काम कर सकते हैं। सो ये मेरे टेक अवेज थे, ये मेरी समरी थी जो राजेंद्र ने कही। एंड लेट्स वेट for him to join the breakout room and you can ask him more questions. Thank you, Rajinder, again. Thanks for your time. So before we go to the third speaker and the fourth speaker, I would request all of you to switch on your videos today. What we are going to do is we're going to take a photo. We will not wait for the end and take a really nice photo of all the 43 of us so that we can tag you, so that you can share your projects, you can share your journeys, the actions that you are taking on social media. Can we have the videos on? क्या आप लोग सब अपनी videos on कर सकते हैं, please? Just quick 30 seconds के लिए. Yeah. Please switch on your videos. Thank you so much. Good to see a lot of smiling faces. And now this call actually feels like a Changemaker Adda. I think we need to do that and show that respect to our speakers who have taken out this time on a Saturday evening, like all of us, and taking out that courage to speak. By the way, it's not easy to speak in front of so many people. Can we take the photo, please? I think there are still a lot of cameras that are without any videos. Yeah, I'll wait for you to switch on the video because you can be in any of the screens. We have 2 screens, and your photo will come out as a black one. Thank you so much for switching on the cameras. Thanks for the smiles. And I would request for you to keep these videos on. Doesn't matter आप कहाँ पर हो, क्या आपका background है, आप सोफे पे हो, आप बेड पे हो. I think what's important is कि हमारे speakers जो है change makers आपकी तरह इससे motivated हो, right? Yeah. Thank you. I'll move to the third speaker. Third speaker also has a very special offer for this community at the end, by the way, which I'll leave for him to share. But before that, let me introduce our third speaker for the Changemaker Adda. It's Neil. Welcome, Neil, to the Changemaker Adda. Thank you for sharing your journey with the Solve Ninjas, with all of us. So Neil has created an organization called Sahas. What is Sahas doing? What is Neil doing? Neil has been using his technology and engineering skills. By the way, he's still in school, okay? So if you are getting overwhelmed कि वो क्या बना रहा है और क्या engineering कर रहा है, he's still in his school. He is trying to create web presence through applications, through websites, and through other mediums for the non-profit organizations or for the projects that are doing problem solving. And I'm sure many of you would like that presence, would like, for your work to come out. Neil, over to you. You have 9 minutes and your time starts now. Thanks for having me on this presentation, Ms. Ritika and Mr. Gautam Raj. So let me start with a small, so my name is Neil Vinci. I am currently studying in 11th grade in National Public School Indiranagar, and I'm based off of Bangalore. And I've seen a lot of
non-profit organizations that have visions, and they're trying to make an impact, but they're limited by their in the technological sphere. So let me start with a small story. So my friend's grandmother, who I was very close with, was always a very kind person, and she used to like feed street dogs and always used to do a lot of stuff for others. So she started this support group for people with cancer, but it actually did not work out in her favor because people did not know about it. People did not uh, know the benefits of such things. And one thing I felt that could have really helped was at least a website and other software applications that could have helped her scale this and actually get clients. So this so I'm the founder of SAHAS, which stands for Software Applications for Humanitarian Aid and Solutions. And this actually has a personal touch. So one example was this. And yeah, so as a avid software developer, I thought, how can I use my skills to help people and make an impact? So that is how I came up with this idea. So to tackle this issue, our team leverages our collective software skills. So um, so we have a team of software engineers, and we make whatever applications nonprofit wants. So a few things we specialize in is custom software development. So we build software tools that streamline operations, such as database management, software analytics, volunteer management systems, etc. We also make websites, which is our main um, is the main product that we sell. So we create and maintain websites for nonprofits. This is to enhance the online presence and ensure they can reach more people and provide better information and services. We also do tech support and training. So beyond creating these tools, we provide ongoing tech support to ensure that the nonprofits can use these solutions effectively. Because a lot of these people who are running nonprofits, they're not very tech savvy. So we help them, we teach them, and we propagate this software culture throughout people of all ages and demographics. So some challenges that we have faced is like a lot of organizations have different needs, and since we're still new and a pretty small organization, it has been a little difficult to tailor our solutions according to each organization. And as I just said, we have limited people, so it is difficult to depend on like only volunteer work to sustain our projects. And we also have a few technical hurdles in terms of maintaining websites and other applications as the software keeps updating. So now comes the main part that I hope you all have been waiting for. So we are always looking to grow our community and expand our impact. So here's a few things you can do to help. If you want to join our organization, that would be great. So we are looking for people that specialize in technology, of course. So mainly website and application design, which is useful for making the actual products for clients. We are also hiring for social media marketing people. This is for people who want to help market our product, build the brand, and scale and popularize SAHAS. And also public relations, people who are good at talking, people who are good at debating. All these are very useful skills, and they help us to reach out to organizations. And we are also open to forming partnerships with other organizations and businesses. Other organizations and businesses that share our vision of empowering nonprofits, such as a few other people that I've seen over here. And one major plus point of joining our organization is it's an amazing learning opportunity. This will help you learn to make solutions or
whatever you're doing, it'll help you get into the real world and do stuff. So that I feel that's actually the best way of learning. So I'm going to put a few links in the chat so you can visit our website. You can contact me through email and yeah. So please check out our website and let me know what you think. And if you want, you can connect with me on LinkedIn or email. That would be great. What your projects are, uh, different kinds of projects. Maybe go talk a little bit about that, and that will be good to hear. What have you learned in this process for yourself? Maybe. Yeah. So we've actually just launched 1 week ago, and we're in the works with 6 non-profit organizations. And we are making websites and applications for each of them. We're also focused on building our social media, our brand, and collaborating with other people in the same space as us. And a few things I've learned is I was as a kid, I was always very introverted. I did not know how to talk to people. I was very actually I was very scared of public speaking. Once I had to speak publicly, and I was so scared that I almost like stopped. Like I almost refrained from speaking during that time. So this has helped me um, improve my public speaking skills. It lets me talk to people, lets me know, learn how to talk to people, how to handle clients, and also how to, it has greatly boosted my um, technological arsenal, if you will, because I've learned a lot more skills, a lot more frameworks and languages in um, while collaborating with different people. And also you are tailoring each product to their needs. That's uh, another skill that I've learned through this. Thank you, Neil. Thank you for sharing your change-making journey. What I gathered, and or if I have to summarize what you said, uh, it started from how you saw something in your own vicinity, in your life, that what people can do if they are given certain help or support, right? And what you're trying to do is, along with your friends, is use your technology skills. That's what you feel confident about, and how you can use that for a larger community, especially for organizations, especially for people who are doing amazing work but find it difficult to share their work outside, right? Or who feel technology is the need, but hey, how do we progress from here? So when we talk of technology, and this is for all Sol Ninjas, we are talking of websites, we are talking of the applications, that you use on your phone, जो आप apps use करते हैं. And thanks for this special offer for this community, Neil. So people who want to get their websites built, want to get their applications built, can reach out to Neil. He has shared his contact, and we'll share this back with all of you over email, over WhatsApp, whatever you have registered with. And I think this is one thing Rajinder also shared, right? Rajinder shared that when he started sharing photos is when his work started to get more recognition. People started understanding that tree plantation is also important and how it is important. And I can see that linkage on how Neil is trying to do it in his own way for the larger community, for a larger set of people. So, as example, Jyot Simran, if you want to, talk about the waste, the action that you are taking in your city in Amritsar around the waste management, and you want to share that with a larger set of people. And if you want a website, or if you want to figure out, hey, how do I solve this through technology so that more people can, work on waste management collectively, maybe Neil can support you with that, right? And that's the power of this Sol Ninja community. Thank you so much, Neil, again. Thanks. Before I move to the fourth speaker, I want to know, I know you cannot unmute yourself,
But can I, if you can put an emoji, how did you learn something from Neil, and even other change makers will love that. Okay, no emotions here, which means that everybody either is not enjoying or is not getting to learn anything from here, and we would love to know that. If you are, please put an emoticon emoji, share your expression through that for all the speakers. Lakpriya, I can see your smile itself from the screen, so thank you for that emoji. All right, we'll move to our fourth speaker. Many of you may have seen the disclosure of our speakers list, but any guesses on who the fourth speaker is? Do you know the name? Do you know which part they are from? I may have said it earlier, but would love for you to guess. If you want to guess, please type it in the chat. Take a wild guess if nothing is coming in the mind, or just take the name of the state. Okay, no guesses. So I'm glad that this is then a surprise. Oh, Saranga has written it out there. It is Susmita. So I would love to invite our fourth speaker, Changemaker Adda, Susmita. Sushmita is the youngest of the speakers today. I will not say in the Changemaker Adda, but because I know there are a lot of other friends of Sushmita here. She's 14 years old. She's from Assam. Sushmita has been using her campaigning and reporting skills to save water, to actually create awareness on clean drinking water in her village. Sushmita is calling from Assam right now. She has weak internet. She will not be able to switch on her video. So the internet in Assam is pretty weak. But we wanted her to come and share her journey for what she has done, as a change maker, as a Jaldoot. You'll hear from her what a Jaldoot means, how she refers herself very proudly as Jaldoot. Welcome, Sushmita. We'll be putting a photo of Sushmita just so that you can relate to her voice and who she is. Sushmita, are you there? Hello Yes. everyone. Thank you so much. कैसे आप सब? My name is Susmita. I read in class 9. My school name is Barakhai High School. My state name is Assam, and my district name is Kachar, and my city name is Silchar. Okay. तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि जलदूत कौन है। जलदूत वो है कि हर स्कूल में 2 दिन का जल जीवन मिशन का एक प्रोग्राम रखा जाता है, जिस प्रोग्राम में ट्रेनिंग दिया जाता है क्लास 8 से 12 तक के बच्चों को। उस ट्रेनिंग में वो बच्चों को 2 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद उन्हें एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है जिसपे उन्हें कुछ एक्टिविटीज के लिए करने के लिए कहा जाता है। ओके, तो वो उसमें उसकी एक्टिविटी करते हैं और उससे उन्हें कुछ सीख मिलती है जो उन्हें उनकी जल्द जर्नी में हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, तो मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो मैं जब अपनी जल्दूत फ्रेंड्स के साथ जल जीवन मिशन मतलब जल के साथ जर्नी में गई, तो फर्स्ट मैंने जर्नी स्टार्ट किया। मैंने एक स्कूल से स्टार्ट किया जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के नर्सरी से क्लास 5 तक के बच्चों को मैं और मेरी जलदूत फ्रेंड्स मिलकर उन्हें कुछ सीखने को मौका दिया कि कैसे हम लोग सेव वाटर कर सकते हैं, कैसे पानी को सेव कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने उन्हें बताया कि मैंने और मेरे जलदूत फ्रेंड्स ने
उन्हें बताया कि आप लोगों के मम्मी पापा पेरेंट्स बड़ों को जाकर ये बात बताना कि ये बात मैं चाहती हूँ कि पूरे विलेज तक आ, ये बात फैलाए। तो जलूस का ये काम था कि पहले ही मैं बोल रही थी कि जलूस का ये काम है कि उनको पहले उनके गांव में पानी के विषय में, पानी के बारे में, सेव वाटर के बारे में वो पूरे गांव में उसका न्यूज़ फैलाए कि कैसे वाटर को क्लीन रखा जाए, कैसे वाटर को सेव किया जाए और क्यों वाटर को सेव करे, क्यों वाटर को क्लीन करे और उससे क्लीन करने से उन्हें क्या मिलेगा। ठीक है। तो मैं जब जर्नी में जाती हूँ मैं जब जर्नी में जाती हूँ वहाँ की कुछ अंकल आंटी होते हैं, तो हम लोग उन लोगों को एक पेड़ के पास एक साथ कर लोगों को पानी के विषय में समझाते। तो फर्स्ट मैं उनको समझाती हूँ वाटर क्यों सेव करना चाहिए। तो कुछ अंकल आंटी क्वेश्चन करते हैं कि क्यों वाटर को सेव किया जाए। तो मैंने उनको आंसर किया कि अंकल, ये जो पानी है एफएसटीसी का, पीडब्ल्यूएसएच का जो पानी है वो एक्चुअली अंडरग्राउंड का पानी होता है। तो उस पानी, भारत सरकार उस पानी को आपको अंडरग्राउंड से उठाकर देते हैं एंड वो पानी पीने से आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो आप ये पानी से कोई आपको बीमारी नहीं होगी। बट अब दमकल या वेल का पानी पीकर देखिए तो आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तो ये जो एफएसटीसी का वाटर है वो पानी पीने से उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी। वो उन्होंने कहा हाँ ठीक है बेटी, आपकी बात बहुत ही ठीक है। उसके बाद मैंने उन लोगों को समझाया क्यों वाटर सेव करना चाहिए। अब तो हमारे यहाँ पानी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बट और कुछ टाइमों बाद फ्यूचर में हमारे पास पानी ही नहीं रहेगा। दुनिया में ज्यादातर पानी है बट हर पानी पीने लायक नहीं है। जितना भी पीने लायक पानी है वो लोग वेस्ट कर रहे हैं। बट हम जल्द उसको बनाया गया है कि हम लोग जाकर देखें कि क्यों पानी क्यों वेस्ट करें, उन्हें समझाए और पानी को कैसे सेव कर कर रखे उन्हें समझाए हम लोग। तो मैं जब अपनी जर्नी में जाती हूँ तो लोगों को मैं वीडियो वगैरह ये सब दिखाकर, जल जीवन मिशन के वीडियो वगैरह ये सब दिखाकर उन्हें समझाती हूँ कि सेव वाटर किया जाए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, जब ब्रश करते हैं तब एफएसटीसी का जो वाटर होता है तो वो टेप खुला छोड़ देते हैं। तो उससे कितना सारा पानी वेस्ट होता है। एंड जब वो आ, पेड़ धोते तब भी वो लोग टेप खुला छोड़ देते, उनसे कितना पानी वेस्ट होता है। तो एक एक अंकल ने मुझे कहा था कि एक चैलेंज के बारे में, मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था। तो एक अंकल ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुनूंगी बेटी। तो मैंने कहा मैं आपसे गुस्सा नहीं करूंगी अंकल, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं मेरा काम है सबको समझाना। मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगी और मैं जितने दिनों तक आपको नहीं समझाऊंगी उतने दिनों तक मैं शांति नहीं ले पाऊंगी। तो उनको मैंने वीडियो वगैरह ये सब दिखाया, उनको समझाया। अभी वो अंकल खुद भी समझे और दूसरों को भी समझाते कि वाटर को सेव करना कितना इम्पोर्टेंट है, वो समझते। ओके। और क्या है कि और क्लीनिंग के बारे में, मैं क्लीनिंग के लिए भी थोड़ा बहुत काम करती हूँ। जब हम लोग जर्नी में जाते हैं, जल्दूस टाउन में जाते हैं हम लोग, शिलचर टाउन में, तो वहाँ के जो लोग होते हैं बिल्डिंग से वो कचरे को पैकेट कर कर वो दूर फेंक देते हैं। तो हम लोग उन लोगों को समझाते आप प्लीज आप लोग यहाँ कचरा मत फेंकिए, क्यों कचरा फेंकने से आपका इलाका भी खराब होगा, ये जो अर्थ है ये भी दूषित होगा। तो मैंने एक आंटी से, मतलब वो एक बार एक टूटा फूटा बाल्टी फेंक रही थी,
तो उनसे बोला था कि कि उन्हें प्लास्टिक मतलब कैसे हम लोग रिसाइकल करें। तो मैंने उस टूटे बाल्टी से एक डस्टबिन बनाकर उन्हें दिया और कहा कि ये जो कचरा है ना आंटी, आप इसमें रखिए, उसके बाद आप ओएनजीसी से बात करिए और उनसे बात करने के बाद उन्हें ये कचरा दीजिए। और एक बार हम लोग जर्नी में जा रहे थे, तो वो यहाँ एक गार्डन था। तो उस गार्डन में भी लोग उसके साइड में थोड़ा सा कूड़ेदान था, तो वहाँ लोग कचरा फेंकते थे। तो लोगों को समझाया मैंने और मेरे जदूस फ्रेंड्स ने, और कहा कि यहाँ कचरा मत फेंकिए। और एक डस्टबिन में हम लोगों ने लिखा कि इस जगह को सुंदर रखने के लिए प्लीज यहाँ कचरे मत फेंकिए। तो मैंने बहुत सारी चैलेंज एक्सेप्ट की है। एक बार तो मेरी घर में कंप्लेन भी आ गई थी कि छोटे बच्चे होकर हम लोगों को क्यों समझा रहे हैं। तो वो मतलब अ, दूर के गांव के एक पंचायत की बात कर रही हूँ। तो वो मतलब कह रहे तुम लड़की हो, तुम छोटी हो, तो तुम्हें अभी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, ना ही ये काम कर। तो मैंने कहा अंकल पढ़ाई तो मैं बिल्कुल ही करूंगी और मेरा एम भी मैं पूरा करूंगी, बट ये जो काम इतना बड़ा काम मिला है मुझे, ये समाज सेविका बनने का शौक मुझे बचपन से था। तो ये जो समाज सेविका बनने का एक मौका मिला है, वो भी काम मैं पूरा करूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनको मैंने समझाया और उन्होंने अपने गांव के सब लोगों को एक साथ बुलाकर उन्हें समझाया क्लीनिंग के बारे में, सेव वाटर के बारे में। और एक दिन जब मैं जर्नी में जा रही थी, तो वहाँ मतलब थोड़े पेड़ काटे जा रहे, तो हम लोगों ने, मैं और मेरे जलदोस्त ने उन्हें रोका। एंड मैंने एक मतलब रूल्स बनाने की कोशिश की कि अगर मेरी प्रिंसिपल सर से मैं जिस स्कूल में पहले पढ़कर आई, उस स्कूल के प्रिंसिपल से एंड एक मुखिया से बात की, जो पेड़ पौधे लगाने के बारे में। तो मैंने उनसे कहा अगर किसी के घर में एक बच्चा पैदा हो या कोई बड़ी उत्सव, ईद वगैरह या बर्थडे या कोई भी पार्टी वगैरह सेलिब्रेट किया जाए, तो उन्हें 20 से 30, 20 से 30 पेड़ पौधा लगाना होगा। उससे क्या, सिर्फ लगाना ही नहीं, उस पेड़ पौधे का देखभाल वगैरह ये सब भी करना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटी, हम आपकी बात मानेंगे एंड दूसरों को भी बोलेंगे। तो मैंने ये बात स्कूल के बच्चों को, जब मैं जर्नी में जाती स्कूल के बच्चों को एंड मेरी जो जलदोज फ्रेंड्स है, मैंने कहा आप लोग भी अपनी मम्मी पापा को ये बात बताएं एंड प्लीज जैसे लोग भी ये काम करेंगे, आप लोग भी अपना ये काम करिए, जैसे कि ये दुनिया पेड़ पौधों से भर जाए। नहीं तो हमारी दुनिया में आसाम में पहले मैंने सुना 6 मंथ ठंडा विंटर होता है और 6 मंथ जो गर्मी होता है। तो अभी देखा जाता है कि 3 से 4 महीना ज्यादातर ठंड होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, क्योंकि इसका कारण है पेड़ पौधों की कमी। मैंने मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर मम्मी पापा से पूछा है, तो उन्होंने भी ये बात ही बताया कि पेड़ पौधा भी कम रहा है बेटी, इसलिए चारों तरफ ये ठंड कमी जा रही। नहीं तो 6 महीने अभी गर्मी रहेगी, 6 महीने ठंडा। तो मैंने ये सुनकर कहा हाँ, इससे तो हमारी सेहत की बहुत मैम मम्मी ने कहा सेहत की भी बहुत नुकसान हो सकती है मतलब। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ किया जाए। तो उस दिन से मैंने एक प्रतिज्ञा जो बोलते प्रॉमिस, तो वो लिया। तो मैंने कहा कि आज से मैं भी पेड़ पौधा लगाऊंगी, दूसरों को भी लगाऊंगी। एक अंकल ने मुझे क्वेश्चन किया था, अगर बेटी हमें इतना पेड़ पौधा ढूंढ के भी नहीं निकाल सके, तो क्या 10 से 20 तक लगा सकते हैं? तो मैंने कहा जी अंकल लगा सकते हैं, बट आप उनकी देखभाल भी करिए, ठीक है? तो उन्होंने कहा जी बेटी मैं भी करूंगी, दूसरों को भी समझाऊंगी, और आपकी ये आइडिया मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। ओके, थैंक यू मैम। Thank you, Susmita.
Thanks a lot. I think she spoke in Hindi, and most of you understood. And I think for those who did not understand, I'll love to summarize or have my takeaways, in English. Um, I think the true power of campaigning and just, mobilizing people on the ground, which means that she talked to her neighbors, relatives, anybody she would get and who would challenge her, right? I think that's a lovely spirit. And she said, hey, I'm going to take that challenge. I think that's my biggest takeaway. I loved what Susmita mentioned, specifically around the trees, and this goes back to what Rajinder had also mentioned around trees, right? Around the temperature, how it really impacts. I think this is something Rajinder also does, which is that gifting saplings on any celebration, on any occasion. And I love this. I love what Sushmita said here. Thank you, Sushmita, for bringing this up. For those who don't know, Sushmita was awarded Chief Minister Prize recently, like last year in 2013, by the Assam Chief Minister for all her work that she has done on the ground. She did not mention this, but I just want to highlight because many of you are also from Assam. She wrote a lot of letters on the water supply scheme. She and she continued that process until she had some reply from the government or from the local authorities. She investigated a lot of water sources in her own village, or in the city that she lives in Silchar, to figure out and to test the water. And like she said, instruction manual was given on how to understand whether the water is clean or not, the taste of the water, just by figuring out from very small things. uh, so Sushmita is one of the 25,000 kids or 25,000 Jalduts from Assam who are working very similarly to Sushmita to campaign about saving water, and especially saving the clean water, which is very hard and which is very difficult to process, especially in a state like Assam. जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर बहुत सारे एलिमेंट्स और बहुत सारे हार्मफुल एलिमेंट्स से मिक्स्ड है. Thank you, Sushmita. We are at 7:15. I want to take quick 2 minutes, and this is a question for all the 4 speakers today. For Pranav, for Rajinder, for Neil, and for Sushmita. Was it easy for you to speak for 9 minutes for all the work that you have done? If you can unmute yourself and quickly say whatever you want to say, we'll have 2 minutes for this. Not really. There was a lot of concising done to get it down into a short. Yeah, so you had to piece. concise what you have done for years, right, to just 9 minutes. Exactly. Yeah. Sushmita, Rajinder, आप क्या ये easy था 9 minutes में अपनी journey share करना, और especially इतने सारे लोगों के साथ share करना? Yes, मैम, easy था. Sure. Thanks, Sushmita. एक और क्वेश्चन आप सब चारों लोगों के लिए, एंड प्रणव, आप आई थिंक हिंदी समझते हो, राइट? सो आई जस्ट स्पीक इन हिंदी फॉर बोथ ऑफ देम एज वेल. क्या एक कोई स्पेशल सेल्फ रिफ्लेक्शन है आप लोगों के लिए जो आपने ये जर्नी एज अ एक्शन टेकर करी है? सुष्मिता एज अ जलदूत, राजेंद्र आपने ट्रीज ग्रो करी हैं, प्रणव you worked on flood bot, Neil, you're building something. What is one reflection for you from your personal life while going on this journey? Kuch, was it, you talked about how you had to go back, keep going back to people, keep going back to your solution, figure out करने के लिए कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्या ये एक बार में हुआ, और इस प्रोसेस में आपके अंदर क्या कुछ मूव हुआ, आपके अंदर कुछ जो आप सोच रहे थे वो होगा या नहीं होगा, कुछ डिफरेंट फील हुआ? So I was
before I started this venture, like I was really arrogant, I'd say, and overconfident in my own ability. And I thought that it'll be a cakewalk. I thought I could easily land clients and easily make stuff. So it was definitely a reality check for me. And it helped me realize that I have to work harder or work smarter. And it also gave me a sense of self-awareness and a deeper understanding of how I should perceive myself and how others perceive. Thank you. Anybody else wants to share? If not, uh, yeah. So I think Neil, you brought up a very good point. हम बहुत बार सोचते हैं कि हमें जिस चीज पे जिस पाथ पे हमें चलना है वो हमें आता है। जब हम एक्चुअली काम करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि ये एक डिफिकल्ट जर्नी है, राइट? और शायद जो स्किल्स हमने सोची थी हमारे में है, वो एक डिफरेंट वे में मम्मी कैन यू या वो एक डिफरेंट वे में यहाँ पे यूज होने वाली हैं, और क्या वो उस एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल है या नहीं। सो एज एग्जांपल, सुष्मिता जब विलेजर्स से बात करती है तो वो इजी टास्क नहीं है, राइट? और आप सब लोग जो अपने काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, और इवन टॉकिंग टू certain leaders of your city, to even friends, to convince them of what you are doing, what your idea is actually not easy. So really congratulations and kudos for what all of you do, actually all of you in this call, especially Neil, Rajinder, Sushmita and Pranav. It's not easy what you are doing, and just one step of yours is actually moving a lot of people to make that change in their own lives, actually, right? I think that uncle who got moved by Sushmita's words, or that neighbor of Rajinder who has started to look at plantation and trees differently. We don't see this every day, and it's all because of change makers like you. आप जैसे चेंज मेकर्स की वजह से ये एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है। अब मैं ज्यादा और नहीं बोलूंगी, आपका टाइम नहीं लूंगी। कैन वी हैव द ब्रेकआउट रूम्स? सो वी विल गो इनटू 4 breakout rooms. We have 10 minutes. Please go ask questions if you have. Choose who you want to ask. Go join that speaker breakout room. These breakout rooms will be in the name of Neil, Pranav, Rajinder, and Sushmita. अपने questions बहुत precise रखिएगा ताकि हम सब share कर सकें। अगर आपके पास कोई questions नहीं है और आपने कुछ आज सीखा है तो वो share कर सकते हैं। And let's give everybody a chance to speak. और अगर वो नहीं भी हो पाता है, तो we'll meet in the next Changemaker Adda. Yeah. Can we have the breakout rooms, please? Yeah, I am opening the breakout rooms and I'm keeping 7 minutes of time. Sure. Sure. राजिंदर, सुष्मिता, आप लोग अपने अपने नाम के ब्रेकआउट रूम में ज्वाइन कर लेना। Hi, ma'am.
Gagna, can you assign everybody to the breakout rooms? I'll have to join one breakout room. Yeah, I'm doing. हाय सुष्मिता, आपको आवाज आ रही है मेरी? शायद नहीं आ रही है नवनीत। ओके, सुष्मिता ने ज्वाइन नहीं किया है, आप ये बोल रहे हैं? नहीं नहीं, शी हैज जॉइंड, उनको आवाज नहीं आ रही है। ओके, नहीं, आई और सुष्मिता they are ने not able to, oh she will come back again. अनम्यूट ओके नहीं, सुष्मिता okay, someone has actually deleted this room. Okay, I am leaving this room and going. So hello everyone, पूर्णिमा, लक्ष्मी, प्रज्ञा, अगर आपको कैसा फील हुआ सुष्मिता को सुनकर? अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड हो रहा है, अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो हम उनके साथ बाद में शेयर कर देंगे। तब तक मैं उनको ढूंढ के लाती हूँ। सुभानी सर, आप हो ना यहाँ? ओके, यस यस ना Hello Purnima, hello. Hey Gagna, so Sushmita joined from two numbers. Can you find if someone named Sushmita in another group? Okay, so Sushmita has to be moved, is what you're saying? Yes, please move her to Sushmita ke room mein if she's in some another room, okay? What is the name of the Sushmita, Sushmita. Okay, I'm joining, ठीक है? हाँ, Lucky प्यार। मनोज। सुष्मिता आ गए हैं क्या? Yes, yes, not yet. और Yes. सुष्मिता, Yes, प्रज्ञा। तो मैं भी ऐसा ही एक कर रही हूँ प्रोजेक्ट, जैसे कि जिसके लिए मुझे दूसरे लोगों की मदद चाहिए और दूसरे लोगों के साथ दूसरे वॉलंटियर्स चाहिए। तो आपने कैसे दूसरे लोगों के इसके बारे में जानकारी दी, और जैसे कितने लोगों को आपने इसके बारे में जानकारी दी, और कैसे आपने दूसरे लोगों को बुलाया इसमें काम करने के लिए? सुष्मिता आई थिंक सुष्मिता ने अभी ज्वाइन किया है। सुष्मिता? नहीं, आई थिंक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। बट थैंक यू फॉर शेयरिंग। क्या कोई और कुछ शेयर करना चाहता है सुष्मिता के लिए? अगर आप अपने काम के बारे में, अगर आपका काम थोड़ा सिमिलर है सुष्मिता से, आप शेयर करना चाहते हैं? Navneet, maybe I can try answering Asma's question. Asma ने पूछा था ना इसके पहले? सुहानी ने पूछा था क्वेश्चन। ओ सुहानी ने पूछा था। ओके, हाय सुहानी। सो ऑफ कोर्स हमें सुष्मिता के आंसर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन तब तक हमें लगता है कि आपको अगर कुछ भी काम करना है, प्लीज रीच आउट टू द मेंटर। अगर आप जलदूत हैं, आप कहाँ पे हैं? मे आई नो आप किस? बैंगलोर। ओ योर ओके, अच्छा आप बैंगलोर में हैं, ग्रेट। तो अगर आप बैंगलोर में हैं तो यू कैन रीच आउट टू वन ऑफ अस, यू कैन रीच आउट टू अ मेंटर। सबसे अच्छा तरीका होता है कि कैंपेन करना। अकेले प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप जैसे लाइक माइंडेड और भी जैसे दोस्त हो या आपसे सीनियर्स हो, उनको इकट्ठा करें, एंड देन द प्रॉब्लम्स बिकम्स much more easier to solve, right? You can reach out to us in the personal chat, and if you are already in the community, then we will find you, or do find us as well.
Thank you. Can you share the contact details? Yes, I will Uh, share it with you. Thank you. थैंक यू सोहानी आप हमारा ऑफिस इधर ही है बेंगलुरु में आप कभी भी आके बात कर सकते हैं Hi, I'm Pragya and I too am in Bangalore. And Sohani, I just want to ask Sohani, but do you also work on waste management and stuff like that? Can help you out. Uh, with- to an Yeah. extent, yeah, I mostly focus on discarded clothing, Okay. recycling old clothing and distributing it to people who need it. So Yeah. No, we live in the same city, so Hey Gagna, breakout rooms are not closed yet. Priyanka, can you hear me? Hi, welcome back to the main room. I hope there was some questions or some sharing that was done. Is there somebody who was cut in the middle while we moved from breakout room to main screen? I think I was, but yeah. Yeah, in our group too, I think Sohani and Susmita were having a conversation and it got cut. And Sure. Sure. maybe if we could take that. Yeah. How is everybody doing? It's 7:30 right now. We have two options. Do you want to still go back to breakout rooms? Or we can also end the Changemaker Adda right now. And I'm asking this question to all of you because you have taken out your precious time apne Saturday se to be here. So yeah, if you can quickly tell me, you can आप लोग unmute कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि क्या हम Changemaker Adda अब यहाँ पे finish करें या फिर आप 5 minutes के लिए breakout room में जाना चाहते हैं अगर बहुत important questions या कुछ learnings बची हैं share करने के लिए. और 5 मिनट्स मिला है तो अच्छा है ठीक है सुष्मिता आपके अलावा Yeah, Ritika, I would like for 5 more minutes because we were on a conversation and it got cut. Okay. Yeah. हेलो Hello. हाँ जी मैम 5 मिनट दे दो सवाल बहुत चल रहे ने जिन्हें ठीक है जवाब को मिल can we go back to the breakout room again please everyone for 5 minutes I think it's okay with everybody right पक्का ना किसी को drop तो नहीं करना है ना yeah क्वेश्चन पूछना था सर मुझे हेलो Hi Sushmita, हाँ जी. यस मैम मुझसे कोई क्वेश्चन
पूछना था, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। हाँ मैंने मेरा पूछा भी था। क्वेश्चन था। हाँ प्राज्ञा और सुहानी का सवाल था। पहले सुहानी आप शेयर कर सकती हैं, देन वी विल मूव या टू। या 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 श्योर। थैंक यू। सो अच्छा sure. तो मैं भी एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ जिसके लिए बहुत दूसरे लोग भी चाहिए हैं। तो जैसे आपका जो जल दूध का था उसमें भी बहुत सारे दूसरे लोगों को आपने कैसे शामिल किया और दूसरे लोगों को कैसे कन्विंस किया कि उनको भी ज्वाइन करना चाहिए? जी देखिए, पहले मेरे स्कूल में ना मैंने अपने प्रिंसिपल सर जो है उनसे बात कर कर अ, एक मतलब क्लास स्टार्ट की थी। जो हम लोग टिफिन टाइम होता है ना स्कूल में, टिफिन टाइम में उनको एक क्लास देती थी जल्दूस को में। उसके साथ साथ हमारे स्कूल जो टीचर होते हैं ना, जो जल्दूत के जो सर होते हैं, उन सर से बात करिए आप, उन्हें क्लास दीजिए जल्लूत का, और टीम वर्क सीखिए, कैसे टीम वर्क से आप काम कर सके। ठीक है, आप अगर उनको अच्छी तरह से समझाएंगे तो वो आपके साथ जल्द जर्नी में जाएंगे। एंड उन्हें काम की तरफ से मतलब एक्साइटेड बनाएंगे कि ये काम कितना अच्छा है, इसे करने से कितनी अच्छी लगेगा आपको, इससे कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे नॉलेज मिलेगा आपको। ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सुहानी फॉर द क्वेश्चन। थोड़ा ऐड कर देती हूँ। जैसे उन्होंने दो चीजें मेंशन करी है, वन इज कंसिस्टेंसी, कि कैसे उन्होंने उसको कंटिन्यूअसली किया एक लंच टाइम के दौरान। दूसरा उन्होंने मेंशन किया है कि उसको थोड़ा एंगेजिंग बनाना, ऐसा बोरिंग ना लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किया। अभी मूव करते हैं दूसरे सवाल पर। प्रज्ञा आपका सवाल था। Actually, I already asked my question, so yeah, Sure, no. sure. Hmm. Also, Pragya, I just messaged you my number in the. Yeah, I saw it. I received it. I will Yeah. go and get back to you. Yeah. लक्ष्मी, आपको कुछ पूछना है? हाँ जी, मुझे ये पूछना है। मैंने भी बहुत सारे लोगों को ऐसे मतलब एक जो है एक लड़का था, छोटा लड़का था, उसने जो क्या था ना, पानी ऐसे नदी के हम किनारे थे, हम लोग पार्टी में गए थे, नदी के किनारे हम लोग ऐसे पार्टी कर रहे थे। तभी एक लड़के ने बहुत सारे कचरा था ना ऐसे बाल्टी में रखा था, वो सारे नदी में ऐसे डाल दिया। तभी मैंने कहा, मैंने हिम्मत जुटा के कहा, मेरा ऐसा हिम्मत नहीं होता है ऐसे लोगों को बोलने का। तो आपका ऐसे हिम्मत कैसे आया इतने लोगों को बोलने का? मैंने आज तक सिर्फ 3-4 लोगों को ही बोला है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी को कोई बात, सच्ची बात बताना चाहिए तो आप किसी से प्लीज मत डरिए। आपको जो बोलना है ना, आप प्लीज दिल खोल कर बोलिए। ठीक है, तो आप उन्हें समझा भी सकेंगे और बोल भी सकेंगे। किसी से मत डरिए, पहला तो है। उसके बाद अगर उसने कचरा फेंका हो तो उसे समझाइए। एक बार ना हो 10 बार समझाइए या 20 बार समझाइए। वो मतलब गारंटी है मेरा, वो एक बार ना हो 20 बार के टाइम में 100 बार भी वो समझेगा। ठीक है, तो एक इंसान को हम बार बार समझाएंगे तो वो बिल्कुल समझेगा। तो आप उसे समझाए कि नदी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। आप उस कचरे को डस्टबिन में कर कर ओएनजीसी के तरफ से, मतलब ओएनजीसी से कनेक्शन कर कर उन्हें वो कचरा दे दे। ठीक है। हाँ, ये रहा। थैंक यू सुष्मिता। तो लकी प्रिया, क्या आपको आंसर मिल गया? मुझे Okay. सुनाई नहीं दे रहा है।
आई थिंक मेरी तरफ नेटवर्क इशू है। सुभानी सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, इसमें आपका वॉइस क्लियर है। ठीक है, लक्ष्मी का ठीक है। या हाँ, आई थिंक लकी प्रिया की तरफ से थोड़ा नेटवर्क इशू है। सो थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन एंड थैंक यू सुष्मिता फॉर आंसरिंग। सुभानी, तो मैं चंद्रिका, आपका कोई सवाल? नहीं नहीं मैम, सुष्मिता ने बहुत अच्छा अच्छा शेयर किया। काफी सारी इंस्पायरिंग मिला। सुष्मिता का जो जो शेयरिंग स्टाइल था एंड जो जो काम किया, उसके लिए बहुत बड़ाई है उसकी। थैंक यू सर, थैंक यू। और सुष्मिता, आपको कैसा लग रहा है आज शेयर करके? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर मैं किसी के साथ कोई ना अच्छी बातें या कुछ शेयर करती हूँ तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हम्म। और चंद्रिका का कोई सवाल है? चंद्रिका ने अनम्यूट किया जी था। हाँ। जी हाँ। सुष्मिता, हम पूछना चाहते हैं कि आप कब से जलदूत हैं और आपने कितने और दोस्तों को आपके साथ जोड़ा है? देखिए, मैं तो पहले बोलना चाहूंगी, ये 23 में हमारे स्कूल में स्टार्ट हुआ, जून महीने में। जी। जून महीने के 5 तारीख से। तो उसके बाद हमारा समर वेकेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैं थोड़ी एक्टिविटी करती थी व्हाट्सएप में, वो जो व्हाट्सएप नंबर है ना, तो उसमें एक्टिविटी करती थी। तो फिर से मुझे व्हाट्सएप से स्कीम से फोन आया। उसके बाद मुझे कहा कि जब मैं 3-4 बार जर्नी में चली गई तो उन्होंने मुझे कॉल कर कर बोला कि आपको प्राइज दिया जाएगा। तो मैं पीएचडी ऑफिस में गई तो वहाँ मुझे प्राइज दिया गया। एंड मेरा एक ग्रुप है जिसमें मेरे जो जलदूत फ्रेंड्स है, जितने जलदूत फ्रेंड्स है, शायद 16 नंबर्स ऑफ जलदूत। ओके, तो वहाँ 16, तो वहाँ मैं उस जलूस के साथ कुछ हर संडे में 3 बजे से 5 बजे तक एक क्वेश्चन आंसर करती हूँ। कुछ डिस्कशन करती हूँ कि ये करने से क्या होगा, वो करने से अगर वो लड़का ये बुरा काम करे तो आप क्या करेंगे। मतलब ऐसे थोड़ा बहुत उनको नॉलेज, और उनके साथ साथ मैं भी सीखती हूँ। ठीक है, तो तो आप अभी मेंटर बन चुके हैं, मतलब आप और लोगों को गाइड कर रही हैं, स्पेशली आपके 16 दोस्तों को। यस मैम, दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू मैम। गुड। सुष्मिता और सर, एंड हमने आपका चेंज मेकर पोर्टफोलियो देखा है। उसमें पता चल रहा है कि आपने कितने लगातार एक्शंस लिए हैं। अपना वो काम आप जारी रखिए, वो एनर्जी एंड एंथुसियाज्म जारी रखिए, और भी दोस्तों को बोलिए कि वो भी ऐसा करें। हाँ, This while. We'll take 2 minutes to close. I'll just wait for others to join in. Can we close all the rooms, please? Yeah. Hmm. मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। No problem, Lakpriya. या फिर किसी और ने बोला, that's okay. Uh, okay, so thank you for staying till 7:30. In fact, beyond that, I would just like to take 2 minutes to close this Changemaker Adda. Again, thank you so much for your time. Many of you are on the Sol Ninja community already. For those who are not, we are just sharing a link on how you can join the Sol Ninja communities of your nearest city or the nearest state. You can scan this QR code, or if you are already on the Sol Ninja Mentor bot, you can write join com and it will take you to further steps. This way, you can join the closest city or the closest state community that we have of almost 2,000 ninjas from across the country. Okay. Yeah. I am also sharing a link of how to create your own Changemaker portfolio or profile, which you can use for any purpose. This is your social portfolio of the actions you are taking, not
as a Solve Ninja only, but anything even beyond that. Any good social work that you are doing in the civic or the climate action space. It can be any of your actions, not necessarily, again, like I said, related to Solve Ninja movement, but of your own change making journey. The link is in the chat. All right. I'm also sharing a feedback form, which we will anyway share in the next 24 hours. We would love that feedback from you. And lastly, this space is not only for just youth like all of you. Invite your family, friends next time to hear others' change-making journey, to hear your own change-making journey. I would also like to know what are the topics that you want to listen or talk about in the next Changemaker Adda. You can unmute or you can type it in the chat. ऐसे कौन से topics हैं जो आप next Changemaker Adda में सुनना चाहते हैं? कुछ भी दिमाग में आ रहा है? अब आज के आपने different topics सुने या देखे? Simran has raised hand. Please go ahead quickly. Yeah. Actually, it was by mistake. No problem. Is there anybody who would like to organize their own Changemaker Adda for their community? Pranav, would you like to do that for your friends and the other changemakers in USA? Same question for Jyot Simran, same question for Gurkamal, Suhani. क्या आप लोग अपनी सिटी में, अपने स्टेट में Changemaker Adda स्टार्ट करना चाहते हैं जो आप एंकर कर सकते हैं? Yeah, actually, I wanted to see if I could talk at one of these. Like, you want to talk or you want to organize? Both are possible. What do you mean by organize? As in, you can organize a Changemaker Adda like this in your own community, in your city. You can be one of the Changemaker who can speak, but you can also invite other Changemakers and take this to your city. Okay, thank you. So, I'll get back to you on the organizing one. Sure. But, you would like to speak next time. yes, yeah. Noted. Thank you. Actually, I would be interested in organizing. Great. And I also want to invite some change makers who actually did something best in their journey, so that we can get inspired from them. Susmita also wants to organize it in Salchar. Great. Thank you so much. I hope all of you can join this Solve Ninja community to be more aware of such opportunities. And we'll keep these names in mind and we'll reach out to you. Again, thank you so much for your time. Like I said, would love you to fill the feedback form. We'll share this feedback as well as a photo of ours, some of the key takeaways in the next 24 hours to you. And thank you so much for spending your evening with us. And I hope you really enjoyed and took something back from this Changemaker. Thank you. Thanks, Pranav. Thanks, Susmita. Thanks, Rajinder. Thanks, Neil. Bye. 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 Thank you, everyone. Can I just stay back for a second? Sorry, somebody's saying something. You can share while others. I just had a question. Yeah. Can I just stay back for a second? Yeah. Yeah, sure, Sani. No, I just wanted to confirm exactly how can I register myself to speak at one of the. Swani, you registered through you are registered with us, right? I think I remember seeing your name in the Changemaker Adda registration, right? Yeah. Yeah. I think so. Yeah. Swani, do you have a Changemaker portfolio with you? No. Yeah. Can I ask you to initiate that Changemaker portfolio? So when we reached out to these 4 ninjas who spoke today, one of the things that we did refer was their Changemaker portfolio. What will happen is that your change-making journey will reflect here, which will not only be for us, but for
everybody actually. You can use this as a document, as a portfolio for anywhere on the web, for any, I don't know, for your application. Sorry, I don't know about your background, be it work, be it college or anything. And I've noted down your name, and you can let me know when you're done filling your Changemaker portfolio. I'll just drop you my number on your DM, and Yes. yeah, because that will act as a great evidence for us to see and know what you have done and how you can contribute back to this community. Yeah. So I have like uh, I I have like an informal, set of photos, like documents and everything about what I've done so far. Sure. So I could send you that in like a consolidated form. Sure. And yeah, if you could also just on the number just let me know how exactly I can sign up. Yeah. Yeah. So once you click that link, it will take you through the process, the CMP one. Okay. You can keep typing in or use your voice. It's a voice to text platform as well. It will create a Changemaker portfolio of yours. You can go on the web and actually can edit that from there as well. So, but you'll have to start from WhatsApp. Yeah. Okay. Thank Yeah. you so much. And I've dropped you my personal email ID, my email ID. You can mail me if you want to share more details and when you are done with your Changemaker portfolio. Okay. Yeah. Thank you. Thanks, Sohani. Bye. Bye. All right, everybody, thank you so much. Unless you have anything to share, I can hang in for 5 minutes. You have questions about Changemaker Adda, about Sol Ninja movement, I'm happy to answer.